Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to the 23rd Shaukat Khanum Cancer Symposium on Oncology Pharmacy. I'm your host, resident pharmacist Zubair Sadiq. And I'm staff pharmacist Amna Habib. Today, we are going to facilitate the discussions and explore innovative solutions together. That's right, Zubair. We're excited to dive into today's topics, but remember, if you see us a little bit too serious, just wave your hand. It would be a gesture for us to loosen up. Good idea, Amna. I'll make sure to keep an eye on the audience for the serious faces. Otherwise, we'll have to do something comical, such as a stand-up comedy session, I guess. Zubair, only if you lead the way. Okay. Nevertheless, the session is conducted to address an issue of high importance, and our respected panel of guests will highlight the critical matters surrounding the drug shortages in oncology setting. A challenge that profoundly impact our patient and healthcare system. A theme of the forum is confronting challenges, mitigating drug shortages to sustain excellence in oncology. Let us start the session by introducing our respective chairpersons to open the forum formally. Zubair, you take the lead. Thank you, Amna. It is said that before you are a leader, success comes when growing yourself. And when you become a leader, success is all about growing others. I'm honored to introduce Dr. Muhammad Tahir Aziz Mughal, the Chief Operating Officer of Shaukat Khanum Memorial Hospital, Lahore, a respected leader in the healthcare field. Mr. Tahir holds a bachelor's in pharmacy and MPhil in pharmacy practice from the University of the Punjab, an MBA from LUMS, and a PhD in pharmacy practice, health informatics from Qaid-e-Azam University, Islamabad. His visionary leadership has not only transformed healthcare practices, but has also fostered a culture of innovation and collaboration within our institution. Next, we will have Mr. Ubaid Ali, who is practical example of the statement that says, quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere efforts, and intelligent direction, skillful execution. Mr. Ubaid Ali is the Deputy Director of Drug Regulatory Authority of Pakistan. He is an MPhil in neuropharmacology and PhD in pharmaceutical chemistry. He has more than 25 years of experience in practicing pharmaceutical and life sciences. Continuing his achievements, he has not only earned international acclaim by training the regulators of Maryland and Ottawa, but also worked in governmental sectors. He has been consultant of WHO and United Nations for various projects. Additionally, he has been awarded the prestigious Pride of Pharmacy Award by the Governor of Sindh, Pakistan. For my next chairperson, I can recall a quote that says, leadership is the capacity to transform vision into reality. It's my pleasure to introduce a dedicated leader, an inspiring visionary, and director of pharmacy Shaukat Khanum Memorial Hospital, Lahore, Peshawar, and Karachi. He is none other than Mr. Umar Akhlaq Bhutta. Mr. Bhutta has been a cornerstone of our institution, leading with compassion and an utmost commitment to excellence in patient care. Mr. Bhutta holds a bachelor's in pharmacy and a master's in health administration from the University of the Punjab, where he also completed his MPhil and PhD in pharmaceutics. He has a diploma in healthcare and hospital management from the Pakistan Institute of Management. Currently, he serves as a preceptor management and leadership in quality, safety, and patient safety, IPPR by ASHP at Shaukat Khanum. Demonstrating his commitment to advancing pharmacy practice, his extensive experience and insights will set the stage for our discussions today. I would like to invite Mr. Umar to please come to the stage to formally open the forum. So put your hands together for Mr. Umar Akhlaq Bhutta. So thank you very much all. I would like to welcome all of you on behalf of Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital Symposium, particularly in the oncology pharmacy session. And today we will going to discuss and learn from the valuable speakers from the drug shortages and how to mitigate and how to make sustainable scenarios where we can ensure that the drugs can be available for the patients. And that will be definitely reduce the mortality and morbidity based with the associated with the unavailability of the oncology drugs. So I would take a special thanks to my speakers who just travel across different long scenarios, specifically Mr. Faisal
Dr. Ubaid. I'm really thankful for all the people who just came on the time, specifically on the Sunday. And I hope the session will be a very valuable, and we all together can sit together and we can think about that, how we can make a good contribution in the betterment for the patient. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's continue with the session. We are highly privileged to have a distinguished panel of experts joining us, each bringing unique perspective to this critical issue. Starting with our first speaker, Mr. Ubadali, you have already been introduced to him. He will be discussing comparative overview of global and local regulatory responses to the drug shortages. So please give a huge applause to Mr. Ubadali. Bismillahirrahmanirrahim. I'm honored to be here this Sunday morning, and thank you all of you who trusted me to talk on such a difficult and scientific issue a little bit. I think I will not add something more about the reasons of drug shortages and the management issue, but I will learn from you how you manage and what is your thinking on this matter. And I just creating a stage for discussions to generate knowledge, to exchange our experiences on the matters. Drug shortages, science, capacity, and policy. What is the science behind the shortages? I will go a little deeper to understand what the science behind the shortages and what is the capacity of government authorities, the capacity of your social circles, capacity of hospitals, capacity of the patient and the healthcare professionals to deal these drug shortages. And what would be the policy and how policy can be effective? What are the roadblocks? I would like to discuss some point of views. The subject or the title which I was given is a comparative overview of global and local regulatory responses to oncology shortages, current landscape and implications. It is my personal point of view. Sometimes I go beyond the boundary. So to discuss the science and nothing more, nothing less. And whatever I have experience, I will share with you. Okay, these are the 5 different references that I use, and the Google I use to understand what the other counterparts in different countries are doing right now. What is the drug shortages? When I was sitting early morning here, I was thinking back in 1996, January. It was my first day in the hospital. I spent my good 5 years in the hospital and dispensed about 100,000 prescription myself so I have little experience to deal patient, to deal physician, to deal situations because I was involved on like all of the pharmacists in the purchases. Every time what I heard, a drug is short. Drug is available, but patient cannot buy it. Drug is available, but our mechanism prevented to come in our pharmacy. These are the regular issues that we have to dealt in the patient in pharmacy setting, and that was a layer 2. This is just June 2023, the Washington Post. 323 drugs are short. It is US. Let's understand first why pharmacy shelf has so many options, because there is so many generics. If a product gets patented off, the market of the generic is coming in. And we found so many generics to pull down the prices, to pull down the scientific investment that may require. You will be surprised to know 50% of the product that invented by the manufacturer, the innovator, or the reference countries are not yet available as a generic after repeated. And this is a dilemma. And out of this 50%, so many products get approved for generic, but it is difficult to market these generic because of the complexity. So many biosimilars coming, easy supply, disease prevail at large, lots of consumer and business is friendly. Everyone wants to earn money.
pharmacy or pharmaceutical sciences is revolving now around the money. Let's think together it is a reality. Healthcare is a business. It is unfortunate, but is a reality. Business has greed. Greed means you expect more than you deserve. Science going deeper, science has no heart. In this scenario, we may say, sometimes science backfire because we develop generic, but we forget to understand why, how some things interact in variable conditions. Information travels so fast, you know, everybody of the pharmacy field know the Baxter is closed. The 25% of the IV solutions are not available in the US. Surgeries are postponed. This is a reality. So fast. Baxter is trying to arrange IV prescriptions from different manufacturing sites. And US government has no options other than to relax their regulatory requirements to cater all these masses. Information does not require visa or NOC, you understand it, but the drug. Evidence matter. Just to sensitize the audience, let's see what the data. The issue of the shortages are major concern all around the world is quality, but not in Pakistan. In Pakistan, what we understand is a different dynamics here. The issue of shortage is directly linked to the price, to the cost, to the benefit, to the business. And there is unknown. You know, Pakistan does not manufacture significant amount of active pharmaceutical ingredient. Pakistani pharmaceutical manufacturing facility does not manufacture significant amount of cancer drugs. And Pakistan contribution towards the manufacturing sciences in terms of generic or biosimilar somehow below the level of residual limits. Increased demands, natural disaster, production discontinuation. What are the primary issues? All these things are gathered from Google or reliable sources. Commercial viability is the issue. There is a word commercial viability. A company wants to manufacture a drug, but the raw material is not available. The raw material is available, individuals is not available. Personnel is available, but the qualifications or the extensive experience is not available. Experience is available, but the scientific evidences are not available. Evidences are available, but the method that used to generate these evidences are not so strong to rely upon. Supply chain disruptions is a universal phenomenon, and regulatory delays. To me, in US or in Europe, there is a reason for regulatory delay. Unluckily, in our scenarios, the bureaucratic channels that is engraved in our systems creates sometimes not always delays. Poor incentives. We are not going to give incentive to the manufacturer, to the supplier, or to the customer by open heart. Patent and follow-on generics as a pressure to lose patient commercial interest. It is an interesting phenomenon. Once you develop a generic or biosimilar, you cut down the cost, and you feel the pressure across the market to cut down more and more. Meanwhile, the innovator or the reference products get outside the market. I'm not asking about particularly on the cancer drug. It is a normal phenomena out of 323 drugs, which was shot in the US last year, and 125 remain shot in last year, 2023. The cancer drug was the only two, the cisplatin and the carboplatin, and nothing more. But the issue is pressure of the generics, and due to the generics market expanding, innovator starts discontinue the product because of certain pressures, and it is backfire availability of the generics. Data speaks more for correct informations, and from correct informations you can generate the knowledge based upon your experience. 224 shortages prevented in US for
2023. This is just the US official data available on their website. 33 new shortages appears in 23 and 94 ongoing shortages from 2022. 82% of API from outside the US. This is the US dilemma. And you know what is the Pakistan? In terms of value, more than 99% we are dependent outside. In terms of volume, more than 90% we are dependent from China or India. This is a reality. We must understand with all care. We have pharmaceutical chemistry department, we have so many chemistry research institute, but we are not able to manufacture single potent molecules. 54% drug manufacturing facilities located domestically and out of 46% outside the US. What about us? When we talk about the sensitive product, biological product, it is not less than 100%. We are dependent on outside manufacturing facility. 46% drug manufacturing facility located in the foreign countries. This is just US. Out of 223 product, 70% of sterile manufacturing or aseptic manufacturing products are coming outside the US. And not outside the US, just neighbor close to you is India. In 2022, there is a new document, and document name is Annexure 1, is a new condition to manufacture sterile manufacturing products. Particularly for aseptic product, there is certain limitations, certain control. They ask about the risk management. They ask about the contamination control strategy. They're asking about real-time monitoring, 100%. They're asking about real-time viable count. They're asking about pressure, temperature, pressure differentials, and humidity monitoring throughout the period. And these are the challenges. That's why aseptic manufacturing has become challenging. Manufacturing issues and API availability are the underlying reason for shortages. In 2023, the data speaks 49% from US, the product which is manufacturing under the US, 17% from India, 8% Germany, 4% Canada, and 2% China, and 20% all others. The limited is the China. But why? Why 2%? Because they have all the manufacturing facility, because they have all the technical knowledges, because their universities are attached with the industry. They understand industry understand university understand the process, industry understand the procedures. So you have to understand your product, you have to understand your process, you have to understand the challenges. With the mindset of 1980s or 1990s or even 20 or 2010, we may not enter in the era of 2025, where artificial intelligence, where data sciences, where a fast-growing technology are working. Raw material supplies shortages, just 28% US, 14% Germany, 11% India too, because India is also dependent on the China. And China is somehow dependent on the India. They are developing very good relationships in terms of supplies. Finland, Spain, China remain 4% and 16% others. What is on thin ice? Clear a lot. If you have one facility, if you have one manufacturer, if you have one supplier, you will always remain on thin ice. If the supplies is coming from one country, and God forbid, like hurricane, if somewhere appear or salvaged situations appear, we will be nowhere. So we have to think about, like all other international cooperation, to develop multiple manufacturing facility at multiple manufacturing sites with multiple manufacturing processes. If you will deal with one process, there is so many materials comes in, and with so many materials attribute. We have a critical processing parameters, material attributes, critical quality attributes, all works together. If one miss, your product will looks like a product, but it will not perform in your body. Just an example to see where cancer products is. In US 2023, 500,000 patients was unable to receive cancer drugs. It's so pathetic, so horrible, so painful to even imagine. A patient is
on bed and there is no drug. But feel it. Where is the cancer drug? It's just here. This is sky below. We have so many countries, and the shortages you can see what are the shortages. Just a data is a very good data published in very good journal after peer reviews. What DRAP is doing? DRAP is just like you. DRAP peoples have similar background of knowledge, similar social circles. They are thinking like you people are thinking, but DRAP is doing something, is developing a window to initiate discussion, to invite manufacturer, to invite suppliers, to invite consumer, and have a discussions. DRAP, like all of those peoples, trying to develop a control communications, some data sciences networking, because I worked in pharmacy for 5 years. I know my other counterpart working in another hospital has some drug, which is very important, but it is not beneficial to keep their inventory. But in case of any emergency, we may call Mr. So-and-so, please give me 5 injection of phenytoin because I have 5 patients from a single home and all have convulsion. What he applied? I have phenytoin, but they are expired. You have to decide. Or we have 2 options. Either to administer the expired drug, otherwise leave the patient on convulsions. So what we did, we have a heart, we have a left brain, we have a right brain, we have some margin where we can go for. We have a very good relationship with the other scientific affairs. So we decided to save the life and do not consider in this particular case, not in every case, the risk of giving expired drug to the patient. Anyway, it is another show. DAP has a dedicated team and DAP is working. DAP has email services, DAP has its publication services. You may call DAP and DAP will do. DAP has some limitation. DAP cannot manufacture drug. In any country, Drug Regulatory Authority does not manufacture drug and does not ask for any other body to manufacture drug. But DAP can relax their standards. DAP can facilitate, like all other countries, DAP can keep their eye open to uh, to facilitate their own mission, that is protection of the public health and promotion of the public health, for which availability of the drug and accessibility are very much important. Self-reliance dependent on ingredient produced in India and China. We have to think about, we have to engage politicians, we have to engage Congress people, we have to engage academia people. And there will be no other option. No one will come and no one ever does. We have to sit together, understand what are our weaknesses. Can we manufacture any vincristine? Can we manufacture vinblastine? Or we will remain in some situation where we are enjoying that our parents did so, our parents did so. COVID chaos contributed a lot. We understand it. Discontinuation of ingredient after regulatory actions. You know, in India, US FDA inspector was inspecting a company. What he said, he observed people are putting acetic acid to the documents. He felt something was wrong with the document and that's why they are discarding the documents. And it was a very serious issue. But the inspector's mindset is limited. He recorded on 483 and the finally company was shut down. There is import alert. If you impose import alert of all drug coming from this manufacturing facility and the drug cisplatin and carboplatin short, now you have to weigh the risk of contamination, the risk of integrity, data integrity, the risk of assay, the risk of impurity. We have to calculate every risk. We cannot leave just on our side. You know, we have a product, we have impurity. One impurity may produce cancer. One impurity may not. We have to understand what science is saying and under what procedures, and the procedure that adopted to conclude the toxicity of the impurity is very important.
Where is the data and how data is of integrity, and how you connect the data to get the informations, and how you discuss this information with the people who have feelings to understand the potential of harms or hazards with particular drugs. The government, academia, societies, industries has to sit together, and there is no other option for self-reliance. Let's conclude. Quality of patient breath is the ultimate priority for me, for you, for society. Deliberate drug shortages is similar to a mass killing. If someone is doing, we may communicate this message. Report shortages to the DRAP aggressively. Report shortages to the social media to build the pressure. Promote science, don't promote brand. Encourage self-reliance to the university and involve university, etc. Thank you very much for listening. Thank you, Dr. Ved. A question and answer session will be after the and 10 after the session. Thank you, Mr. Obaidali, for such a powerful presentation. Moving ahead, it's a famous saying, access to medicine is a fundamental human right. My next speaker is Ms. Mariam Fatima, who will discuss the impact of drug shortages on patient outcomes in cancer treatment. She is the Assistant Manager and Preceptor Sterile Services and Total Parenteral Nutrition, IPPRP by ASHP. She has completed her PharmD and MPhil in Pharmacology from University of the Punjab. She is currently pursuing her PhD from the same institute. Ms. Miriam's insights will remind us of the human element at the heart of our work, emphasizing the profound impact that the drug availability has on patient lives. Please put your hands together for Ms. Mariam Fatima. Thank you, Zubair. Thank you so much for the kind introduction. Good morning and Assalamu alaikum. I'm Mariam Fatma. Today I'll discuss a very important topic, which is very crucial to our field, that is the impact of drug shortages on patient outcomes in cancer treatment. First of all, I would like to disclose that I have no personal conflicts with any of the organizations, and I'll not disclose anything. So let's start with the patient. What does a cancer patient have? आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कोई इनकाउंटर हुआ हो किसी भी कैंसर पेशेंट से, बिकॉज आई हैव बीन सर्विंग फ्रॉम अ कैंसर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लास्ट 10 years. सो मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स जो हैं वो मल्टीपल क्यूरीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज के साथ अपेयर होते हैं. पेशेंट्स मतलब उसमें बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं. सो मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है पेशेंट कम्युनिकेशन के साथ. आप लोगों के ख्याल में एक कैंसर पेशेंट के पास क्या होता है? लेट्स एक्सप्लेन. ही हैज होप. होप किस चीज की? कि वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा. ही हैज मेमोरीज. मेमोरीज जो उसकी अपनी फैमिली के साथ हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी के साथ उसके अटैच्ड हैं. देन द रिलेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो उसके अपने प्यारे हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब उसकी उस जर्नी का पार्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द फेथ एंड द कॉन्फिडेंस. किस पे? अल्लाह पे, डॉक्टर्स पे, और फिर ट्रीटमेंट पे. सो जस्ट इमेजिन कि पेशेंट जो कि कैंसर की बीमारी से लड़ रहा है, उसके पास अगर ड्रग्स ही नहीं है तो क्या कॉन्फिडेंस होगा उसका उस ट्रीटमेंट पे, अपने डॉक्टर्स पे, और उसका क्या सिनेरियो होगा? वी विल डिस्कस दिस टुडे इन डिटेल. So I'm going to present a real picture of a cancer patient in our hospital. I'll not disclose the name and other things, but just for an example. So do you all know about the Burkitt's lymphoma? It's a kind of cancer, blood cancer. It's a non-Hodgkin lymphoma. So a 40 years old male patient,
appeared in our hospital and diagnosed with Burkitt's lymphoma. The primary oncology team has decided to give him RDA-EPOC protocol. This protocol has multiple drugs in it, and one of the very important drug is the etoposide. During his treatment and after receiving the first cycle of chemotherapy, the pharmacy communicated to the primary oncology team and the patient that the drug is not available for the subsequent cycles. So, किसी भी तरीके से उसको treat तो करना था. So, primary oncology team has decided to switch the patient to another alternate chemo. So, after the subsequent cycles and post-chemo scans and reports, what was the response? There was a suboptimal treatment response that is the partial remission of the disease. अब यहाँ पे मेरे आप लोगों से और हम सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं आज इस कॉज के लिए, वहाँ पे कुछ सवाल जनरेट होते हैं. उस पेशेंट ने जब ये सारी ट्रीटमेंट जिस बात से वो गुजरा होगा, उसके पास 2-3 चीजें जो उसके दिमाग में आई होंगी या जो हमारे दिमाग में इस टाइम पे आ रही हैं. How did this shortage impact patients' clinical outcomes or prognosis? Increased likelihood of recurrence and relapse. Obviously, अगर ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं मिल रही, फर्स्ट लाइन चॉइस नहीं मिल रही, तो आप यही सोचेंगे ना कि अब मेरे ट्रीटमेंट का क्या बनेगा. सेकेंडली, जब ऑल्टरनेट कीमोस पे पेशेंट स्विच होता है तो उससे किस किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स पेशेंट को सफर करने पड़ते हैं. और इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम पे अराइज हुए होंगे. सो अगर हम बहुत शॉर्टली डिफरेंट बॉडीज की डेफिनेशंस पढ़ें ड्रग शॉर्टेजेस की, जो प्रॉब्लम है, जो कॉज है जिसके लिए हम आज सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो एफडीए ने इसकी एक सिंपल सी एग्जाम जो डेफिनेशन दी है, दैट इज इट्स अ सिचुएशन इन विच द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द क्लिनिकल इंटरचेंजेबल वर्जन्स ऑफ एन एफडीए रेगुलेटेड मेडिसिन इज इनएडिक्वेट. सो बेसिकली ये इनएडिक्वेट सप्लाई है डिमांड और सप्लाई का. जैसे आई एग्री विद डॉक्टर उबैद जो उन्होंने स्टार्ट में भी बताया ड्रग शॉर्टेजेस का. बट मेरे पर्सपेक्टिव में हर वो दवाई, हर वो चीज जो कि पेशेंट तक नहीं पहुंच सकती, वो शॉर्टेज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दवाई अवेलेबल है लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम में से 90% पॉपुलेशन उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, दैट इज ऑल्सो अ ड्रग शॉर्टेज. इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स या क्वालिटी जिनकी नहीं, पुअर क्वालिटी वाली ड्रग्स जो हैं वो अगर प्रिपेयर होंगी तो वो तमाम जो हैं वो ड्रग शॉर्टेजेस में ही इंक्लूड होंगी. सो ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी डेफिनेशंस नहीं है, इट्स अ ग्रेट जर्नी. सो दीज आर माई परसेप्शंस. और पूरी दुनिया का जो भी डाटा है उसमें हमारे मुल्क का भी अगर डाटा देखा जाए, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे आज से 6 महीने पुरानी ये खबर है जिसमें बताया गया है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स ही हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है. अब लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स के कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर सपोर्ट की ड्रग्स नहीं है. कैंसर पेशेंट की ड्रग्स का जिक्र तो बहुत बाद में आता है, लेकिन स्टिल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So we all need to think about all these critical scenarios. और इसी discussion के अंदर, first of all, we will discuss the causes of the drug shortages. There are multiple causes, जैसे डॉक्टर वैद ने भी discuss किया. I'll not go into the details, लेकिन कुछ particular चीजें और इससे related examples I want to share with you people. So first of all, this is the manufacturing issue. Manufacturing problems बहुत ज़्यादा critical role play करते हैं in the production or drug shortages subsequently. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनका जो प्लांट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी शॉर्टेज, आपकी सप्लाई रुक जाएगी. इसी तरह कोई कंटामिनेशन होती है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग पास नहीं होती, QC पास नहीं होते, तो क्या होगा, आपकी ड्रग शॉर्टेज में चली जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कोई आ जाते हैं, टैबलेट रिलेटेड, कोई भी डोजेज फॉर्म रिलेटेड, तो ड्रग शॉर्टेजेस की तरफ जाएगी. Second main issue is the supply chain issue. Raw material shortages. हमारे मुल्क में बहुत से raw materials are not available. We need to import them. और जब import के processes start होते हैं तो उसमें यही होता है कि there is a long queue, gaps हैं कि जिसको fill करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद कहीं जाके raw material आता है और फिर manufacturing start होती है. Global supply chains में issues आ गए, वर्ल्ड वाइड कोई चीज शॉर्ट हो जाती है, आप क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे. कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, एक प्लांट है वो एक कैपेसिटी
को पूरा करने के लिए, एक पब्लिक डिमांड को पूरा करने के लिए, सप्लाई को पूरा करने के लिए कुछ मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है या बनाता है, या एक बल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाता, तो वो भी ड्रग शॉर्टेज है। नेक्स्ट इशू इज द रेगुलेटरी इशू। इस टाइम पे करंटली बाकी सब कॉजेज के साथ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफडीए फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग का या मॉलिक्यूल का कह देती है कि ये नहीं यूज हो सकता, कोई वार्निंग दे देती है, तो वो भी ड्रग शॉर्टेज का बाइस बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे कीमोथेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ सपोर्टिव ड्रग्स हैं जो कि पास्ट में उसकी सपोर्टिव ड्रग की रिकॉल हो गई वो ड्रग, और वो फिर शॉर्ट हो गई मार्केट में, वो दैट इज ऑल्सो अ शॉर्टेज। अब उसकी रिप्लेसमेंट में ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़े और क्रिएट करने पड़े। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुल्क में अवेलेबल ही नहीं है, स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं, लेकिन वी नीड टू इम्पोर्ट ऑल दीज ड्रग्स, और अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स तब आती हैं जब अक्सर पेशेंट्स हमारे साथ नहीं होते, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग क्यू टू फॉलो, जिसमें आपको अप्रूवल्स चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइक दीज थिंग्स। दीज आर द बिटर रियलिटीज। रिकॉल हो जाती है कोई ड्रग ऑब्वियसली, तो वो भी ड्रग शॉर्टेज है। इंक्रीज इन डिमांड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड का जमाना था, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, उसमें क्या चीज शॉर्ट हो गई थी? बहुत सिंपल सिंपल ड्रग्स। पैराडोल शॉर्ट हो गई, एजोमेक्स शॉर्ट होगी, हम सब लोगों ने खाई होगी, यकीन है। सो वो कौन सा दौर था? किसी को पता भी नहीं था एजोमेक्स का कि वो खानी है, लेकिन इस इंडिकेशन में जब अपीयर हुई तो हम सब लोगों ने पूरी दुनिया में इतनी इस्तेमाल की कि वो हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में वो शॉर्ट हो गई। सडन आउटब्रेक्स जो हैं वो भी एक कॉज बनते हैं। देन मार्केट फोर्स इश्यूज, देर आर सर्टन पैरामीटर्स जो कि इस चीज को देख रहे हैं, जिसमें जेनेरिक ड्रग प्राइसिंग है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी पेटेंट जो है उनकी प्राइस ही बहुत कम है। अगर कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बनाना चाहती है, लेकिन उसकी वो उतनी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकती, तो कोई महंगी दवाई तो नहीं खरीदेगा। अगर 2 रुपए की दवाई है और वो 3 रुपए की बना के बेचेगा, तो 3 रुपए की तो कोई भी नहीं खरीदेगा। सो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, प्राइस कैप्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कहती हैं कि ये सिरप या ये दवाई आपने इतने की ही बेचनी है। अब आज जो रेट था एक्सीपिएंट्स का या किसी भी और चीज का, वो अब नहीं रहा। जैसे पिछले साल जो किसी भी एक्सीपिएंट का रेट होगा पर केजी के हिसाब से वो चेंज हो गया होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज फिर वो बनाना ही छोड़ देती हैं, वो बनाती ही नहीं चीज। दे आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, और जिसमें बहुत माइन्यूट सी एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड टू ड्रग which are specifically for chemotherapeutic drugs. I'm talking about all the drugs. So delayed innovations हैं, कोई न्यू रिसर्च मॉलिक्यूल्स या न्यू रिसर्च हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई बहुत ज्यादा अपनी इनोवेशंस नहीं पैदा कर रहा, जिसकी वजह से हम खुद कुछ भी नहीं बना रहे। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। So what does these causes impact on patient? This is very important. There are multiple impacts which are some of I will discuss in detail. नंबर 1 इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को पता चले कि उसकी ट्रीटमेंट में दवाई ही नहीं है, तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट वो अपने माइंड में क्रिएट करता है, क्या नेगेटिव फोर्सेस है, उसकी सारी होप, उसकी सारी जो एक विल थी, जो विल टू रिकवरी थी, वो सब खत्म हो जाती है। फियर उसका, डिप्रेशन, उसकी फैमिली, उसके अटेंडेंट्स, वो सब इसके साथ इंटर रिलेटेड है। फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। देन delayed treatment. For example, if first line chemotherapy is not available to dispense, what else? Disease progression हो जाएगी, metastasis हो सकती है, reduced survival rates हो सकते हैं, increased risk of complications by treating with some other chemotherapies. Next is suboptimal treatment alternatives. For example, if certain drug is not available, we have to switch to some other alternatives. What causes? कुछ एडवर्स इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटीज हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, एक पेशेंट ने 6 महीने में ठीक होना था, 3 महीने में ठीक होना था, लेकिन अब ड्रग अवेलेबल नहीं है, उसको डिफरेंट और कीमोथेरेप्यूटिक साइकिल्स लेने पड़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट 1 साल पे जा सकता है। सो क्या उसका इम्पैक्ट होगा एक पेशेंट पे? सिमिलरली इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंस, ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो रिकरेंस और रिलैप्स के चांसेस उतने ही हैं। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो जिनकी अवेलेबिलिटी जरूरी होती है बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, और इफ दैट ड्रग इज नॉट अवेलेबल, सो जो उससे रिलेटेड प्लान्स हैं वो भी सब शटर हो जाते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन। अगर एक पेशेंट ने प्लान किया हुआ है कि 10 लाख 5 लाख में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अब उसको वो कॉस्टली मेडिसिन परचेज करनी है जो कि डॉक्टर ने अब उसके लिए प्रिस्क्राइब की है, सो व्हाट वुड ही डू? कुछ भी नहीं कर सकेगा वो फिर इस परेशानी में होगा कि चीजें बेचेगा, अपने फाइनेंशियल्स को मीट करने के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ेंगे। कोविड का एक मुझे छोटा सा वाकया याद है कि कोविड में आपको आइडिया होगा कि हम सब लोग जो हैं वो कितने एसओपीज फॉलो कर रहे थे, और हॉस्पिटल्स में काम करते हुए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसकी शॉर्टेज फेस करनी पड़ी, दैट वाज अ सिंपल हैंड सैनिटाइजर। आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे मैंडेटरी था, टू वर्क, टू इवन मीट, टू इवन शेक हैंड विद योर कोलीग। तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि हमारे पास ये जो एक हम चीज रेगुलर बेसिस पे यूज करते थे, दैट इज प्यूरल, वो नहीं अवेलेबल था। सो बीइंग अ फार्मासिस्ट, हम सारे बैठे और हमने ये सोचा कि यार हम खुद क्यों नहीं इस चीज को बना सकते या देख सकते। हमने इसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चेक किए, इसकी प्रॉपर जो इसके प्रोसीजर्स थे वो फॉलो किए, एंड वी मेड आवर ओन हैंड सैनिटाइजर। और फिर उस टाइम में, उस क्रूशल टाइम में, हमने इस पूरे प्रोसेस को अप्रूव करवाया अपनी कमेटी से, जो हमारी इन्फेक्शियस कंट्रोल कमेटी, और हमने इसको जो है वो इस्तेमाल किया। सो वी हैव द पोटेंशियल टू डू वर्क, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब जो है कोलैबोरेटिवली सोचें। सो स्ट्रैटेजी टू ओवरकम ड्रग शॉर्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मे बी जो अभी हम कुछ फ्यू प्रेजेंटेशंस अभी जो फॉरवर्ड हैं उसके अंदर इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाए, बट मैं सिर्फ थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज पे आपको बताऊंगी बीइंग अ फार्मासिस्ट कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए। इन्वेंट्री रिलेटेड है कि आपके अगर सिस्टम्स में, हॉस्पिटल्स में जो आपकी इन्वेंट्री है उसको आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक बफर स्टॉक आपने अपना रखा हुआ है, कुशन स्टॉक, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूटिलाइज दैट स्टॉक। यू हैव टू मेंटेन योर इन्वेंट्री इन सच अ वे कि आपको मार्केट के साथ रिलेशंस में पता चले कि ये ड्रग अब मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी तो क्या ऑल्टरनेटिव आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की पहली कॉल आपको आएगी कि व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेटिव। सो आप अपने आप के नॉलेज को बीइंग अ फार्मासिस्ट अपग्रेड करें, एंड यू शुड नो कि किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच हो सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, एक मेरी अपनी रूटीन प्रैक्टिस की है, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू पीपल, कि ओरल जो साइक्लोफॉस्फामाइड टैबलेट्स एंड ओरल एटोपोसाइड कैप्सूल्स, दे आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। हमें अपने पेशेंट्स के लिए इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सो इंपोर्ट प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, देयर आर मेनी स्टेप्स टू फॉलो। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिग आउट द रेफरेंसेस कि क्या कोई और डोजेज फॉर्म है जो हम इन पेशेंट्स को बना के दे सकते हैं, एंड वी केम टू नो कि वी कैन प्रिपेयर एक्सटेम्पोरेनियस सिरप्स सॉल्यूशंस फॉर दोज पेशेंट्स। और वो फिर हमने सक्सेसफुली अपने पेशेंट्स के लिए जो है इन हाउस प्रिपेयर किए और डिस्पेंस किए, और पेशेंट्स वो रूटीन में ले रहे हैं। उनकी दवाई अगर नहीं भी आएगी तो कम से कम उनका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी कोलैबोरेटली ज्वाइन टुगेदर, और आज इस फोरम पे हम सब मिलके ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारे क्या लूप होल्स हैं, और पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए और पेशेंट्स के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Well executed, Ms. Mariam. Thank you for such an amazing presentation. Next, we shall hear from Mr. Faisalaji Sandela, who embodies the philosophy that proactive people focus on solutions, not the problems. Mr. Faisalaji Sandela will share his valuable expertise on strategies of early detection of oncology drug shortages, an essential topic as we strive to enhance our proactive measures in the field. Mr. Sandela has years of experience in supply chain management. He has jumped the ladder from working as a supervisor, assistant chief pharmacist, and now as manager pharmacy services at Shifa International Hospital, Islamabad. Please put your hands together for Mr. Faisalaji Sandela. Assalamu alaikum, everyone. So we are discussing drug shortages. Drug shortages. As a hospital pharmacist, we all know हमारा अच्छा खासा time in drug shortages और इनको meet करने में लग रहा होता है. तो thank you so much, Omar and Tahir Saab, for inviting me. So
this important session. So strategies for early detection. तो it means कि हमें पता तो है कि problems क्या हैं, how we can go and how to do something कि ये important aspect हम meet कर सकें और patient care achieve हो. The content should be shortage, how these happen and reasons and impact as well as last strategies. A major concern of pharmacist, जैसे मैंने कहा, एज a हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डे वन से जैसे ही आप आते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स, एंटीडोट्स, लाइफ सेविंग मेडिकेशंस, एनीथिंग, लिस्ट इज एग्जॉस्टिव. सिर्फ कीमो की मेडिकेशंस नहीं, तमाम मेडिकेशंस की शॉर्टेजेस मिल रही होती हैं. क्यों शॉर्टेजेस आ रही हैं? ब्रीफ समरी. 2011 के बाद ये डायलेमा बहुत बढ़ा. कोविड ने इसमें बहुत इम्पैक्ट प्ले किया कि मैक्सिमम शॉर्टेजेस वर रिपोर्टेड एंड कोविड वाज अ सडन इम्पैक्ट ऑन अस. फाइनेंशियल चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमर साहब. फाइनेंशियल पे मास्टर अगर आप नहीं हैं, आप अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट्स नहीं कर रहे, द साइकिल इज नॉट बीन मेंटेन्ड, तो इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. एंड लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो पहली जो दो बातें हैं उस पे आपका शायद इख्तियार नहीं. थर्ड एंड फोर्थ इज माइट बी इन आवर नॉलेज कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स को हम इम्प्रूव करें, उन साइकिल्स को. वी हैव टू गॉट द विन विन सिचुएशन. आफ्टर ऑल बिजनेस की बात हो रही है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने इतना पैसा लगाया है वो उसको रिटर्न और वो चीज़ चाहता है कि मैं भी आपको सप्लाई दूं बट इन रिटर्न ही शुड ऑल्सो गेट द फाइनेंसेस. और लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन. अनफॉर्चुनेटली देर इज नो proper channel for this. Recently कुछ changes आई हैं, I'll share in my details. शॉर्टेज रीजंस इंटरनेशनली, क्वालिटी कंसर्न्स हैं, फैसिलिटी या आपके प्रोडक्ट्स, दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या रॉ मटेरियल, अदर मटेरियल शॉर्टेजेस. पाकिस्तान में डॉक्टर उबैद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन और टू कंपनीज हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एपीआईज विद इन लाहौर एंड कराची. बट इस पे एम्फेसिस जितना दिया जाएगा तभी बेहतरी आएगी, बिकॉज 90% प्लस वी आर इम्पोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स. इंक्रीज डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो गई है. लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ड्यू टू देयर ओन आर इंस्पेक्शन और अदर फाइनेंशियल मैटर्स. Institutions not fulfilling the demands, payments, and supplier do not supply you within approved lead times. लीड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपका अगर एग्रीड 45 डेज 30 डेज में एक साइकिल आना है, अगर वो उसमें आपको पार्शल सप्लाईज देगा, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल. अदरवाइज आप हर वक्त इसी साइकिल के गिर्द घूमते रहेंगे. ये इंपॉर्टेंट है जी. सो इन पाकिस्तान अगर आप देखें तो सप्लाई, डिमांड, रेगुलेटरी तीनों कंसर्न प्रिवेल करते हैं. तो हमें इन तीनों को देखने की ज़रूरत है. सप्लाई इश्यूज में मैन्युफैक्चरिंग साइड कैसे इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल या एक्सिपिएंट्स की शॉर्टेज को इम्प्रूव करना है. दे हैव टू मेंटेन, जिस तरह हम फार्मेसी में अपने लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं, दे हैव टू मेंटेन एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एज वेल. how according to demand they have to keep their inventory levels. Similarly business concerns को improve करना है. और logistics issues मोस्टली कराची, लाहौर बिग सिटीज में है. कराची में तो आपको ट्रांसपोर्ट, और आजकल पाकिस्तान में 2022-23 के बाद आप देखें तो रोड ब्लॉक्स, शॉर्टेजेस, तो लॉजिस्टिक्स की वजह से भी आप अपना ऑर्डर अगर रख भी रहे होंगे तो आपको पता चलेगा वो 3 डेज में नहीं पहुंच पाएगा. इट विल टेक 10 to 14 डेज मोर. सो हमारे कंसल्टेंट एक डॉक्टर अजहर शफीज है, हमारी इनसे दिन रात बात हो रही होती है. कीमो के मेडिकेशन, अदर एडजुवेंट थेरेपीज कब पहुंचेंगी, क्या होगा यार, कैसे. तो वी हैव टू अकोमोडेट देम एज वेल. डिमांड इश्यूज में जस्ट इन टाइम, वी एज एंड यूजर ऑलवेज वांट कि मैं कॉल करूं मेरी चीज मेरे तक पहुंच जाए. ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता. फॉर जस्ट इन टाइम यू हैव टू क्रिएट एंड हैव सम लेवल्स के एंड यूजर जो आपका सप्लायर है उसको भी इतना टाइम मिल जाए. एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव द टाइम कि आप पेशेंट के लिए वो मेंटेन कर सकें. इंक्रीज मार्केटिंग, वी ऑल नो फोर्सेस हैं हर वक्त इसकी सप्लाईज, डिमांड्स और इन चीज़ों के हवाले से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट कर रही होती हैं. गवर्नमेंट लेवल पे टेंडरिंग सिस्टम है, बहुत टीडियस प्रोसीजर है. एंड रेगुलेटरी इश्यूज में मेजर इंस्पेक्शन कंप्लायंस की रीजंस हैं. इम्पैक्ट, जस्ट वन स्लाइड, मिस मरियम हैज़ एलेबोरेटेड अ लॉट, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक पेशेंट की कहानी बताई. इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जी. इवन हमारी भी फैमिलीज़ में से अगर किसी एक को नॉर्मल सी दवाई भी ना मिले तो हमें खुद भी परेशानी होती है, और वी डू ऑफर देम सम अल्टरनेट्स. एनजाइटी और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट सर्वाइवल में इश्यूज बन रहे होते हैं. 2023 में ब्रेस्ट कैंसर में ऑलमोस्ट 1 in 10 कैंसर पेशेंट्स हैव सफर्ड फॉर दिस. और डिस्टर्बेंस इन कीमोसाइकिल स्पेशली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. हमें ये प्रॉब्लम कि आपके डॉक्टर ने क्या करना है एज अ फार्मासिस्ट, व्हाट सोल्यूशन यू ऑफर टू हिम. आपके पास जो मुतबादिल दवाई वो मांग रहा है
आया वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी है या नहीं। मिस्टर उमर विल एग्री विद, हमारी इन पे बात चलती रहती है। मोस्टली दवाइयाँ जब रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ब्लैक मार्केटर्स बीच में आते हैं, अनक्लासिफाइड ये ड्रग्स, वो अनफॉर्चुनेटली दे आर बाउंड टू डू दैट। फिर उनके अपने सेफ्टी कंसर्न्स हैं। बाय द वे, आई एम नॉट प्रोमोटर ऑफ दोज, वी ऑलवेज डिस्करेज के क्लासिफाइड ड्रग्स ना ली जाएं। वी हैव टू ऑफर सम बेटर सॉल्यूशंस। और जो पेशेंट के कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स हैं, मोस्टली आपको पता है प्रोटोकॉल सारे इस तरीके से कंबाइंड, किसी एक इंग्रेडिएंट के ना होने की वजह से वो रेजिमेंट डिस्टर्ब, पेशेंट ट्रीटमेंट और अनफेलियर। सो इस पे चूंकि मैंने क्विकली जंप किया, व्हाट टू डू, वी ऑल आर हेयर टू डिस्कस एंड सी व्हाट वी कैन डू। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत रोबस्ट सिस्टम्स नहीं है। आई एम थैंकफुल टू शौकत खानम के उन्होंने एक ये फोरम, आई एम प्रेजेंटिंग हियर फर्स्ट टाइम के शॉर्टेजेस पे भी बात हो रही है, अदरवाइज और क्लिनिकल बाकी रिसर्च सब कुछ पे हो रहा है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम के शॉर्टेजेस पे बात कर रहे हैं। वी शुड एफडीए ने एक स्ट्रैटेजिक प्लान डिवाइस किया था बहुत पहले। फॉरेन्स, यूएस, कनाडा, ये लोग रिसर्च टेक्नोलॉजीज पे बड़ा बिलीव करते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो एंड वी शुड एक्नॉलेज दैट। मिस मरियम ने बताया कि हमने रिसर्च की और हमने ऑल्टरनेट खुद मौजूद किया, तो वी हैव द कैपेसिटी, तो वी हैव टू फॉलो सम प्लान्स। तो अकॉर्डिंग टू एफडीए, अगर उनको नोटिफाई हो जाए कि कोई एक नियर फ्यूचर में एक शॉर्टेज होने वाली है किसी भी ड्रग की, दे एग्जीक्यूट दिस एफडीए स्ट्रैटेजिक प्लान। उसके मेजर क्या हैं कंपोनेंट्स? दे आस्क द मैन्युफैक्चरर्स के उनमें कोई अल्टरनेट हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा के उस ड्रग, उस जेनरिक सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डू दे इंस्पेक्शंस आर बीइंग एक्सपीडाइटेड, अगर वहाँ पे रेगुलेटर्स टाइमली एक्सपीडाइट कर दें, इंस्पेक्शन शायद हो भी जाते हों, इंस्पेक्शंस के बाद जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको क्लोज करने में टाइम, आपको ये तो नहीं कि खाली इंस्पेक्शन किया एंड यू हैव टू गो एंड ओपन एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। उनकी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अगर टाइमली जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे, इवन माइन्यूट से माइन्यूट भी होगी, एसेप्टिक प्रिपरेशंस में वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली एनफोर्समेंट, वो हो सकता है कि कुछ केसेस में टेम्परेरी एनफोर्समेंट भी कर दें, डिस्क्रिशन। पोस्ट कोविड हमें बहुत सारी ड्रग्स यूज करने की जिस तरह इजाजत मिल गई थी, इस तरीके से वो एनफोर्समेंट के जरिए भी कुछ ला सकते हैं ताकि पेशेंट केयर सफर ना करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द आरसीएज एंड मिटिगेशन। इसी पर्सपेक्टिव में स्ट्रैटेजिक प्लान सिंपल सी चीज़ है, मैन्युफैक्चरर, इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट के साथ वो इंटरनेशनली इसको कवर करते हैं। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी क्या हो सकती हैं? हम मैनेजमेंट ऑफ करंट ड्रग शॉर्टेज, जो यूजुअली शायद हम लोग डे इन डे आउट कर ही रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द करंट स्टॉक। हमें जैसे ही पता चलता है ये ड्रग शॉर्ट होने वाली है, हम उसको सम स्पेसिफिकली, सम अनअवॉइडेबल चीज़ों में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमने यहाँ यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं देना, या केस टू केस हम सप्लाई देंगे। यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट्स पे स्विच होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इन कीमोथेरेपी मोस्टली यू डोंट हैव वेरी स्पेसिफिक ऑल्टरनेट्स जिन पे आप स्विच कर सकें, आपको कंप्लीट रेजिमेंट चेंज करना होता है। वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए हम बेहतर कर सकते हैं बाय पूलिंग सम पेशेंट्स। आपको पता है कि डोजेजेस के कॉन्टेक्स्ट में सेविंग, तो आप 1 से 3 पेशेंट कवर कर सकते हैं जहां पहले एक ही पेशेंट को हो रहा था, तो वेस्टेजेस को रोक सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आप इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यूजुअली आपके जो इतने सप्लायर्स, वेंडर्स हैं, वो यूजुअली फेयर फील कर रहे होते हैं कि यार हमने अगर शॉर्टेज या एनए की कुछ हमने कर दी तो कहीं ड्रैप हमें कुछ कह ना दे, हमें कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। तो यूजुअली ये भी एक फियर वी हैव इनकाउंटर्ड। द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, लेकिन नॉट ऑन दैट लेवल के आपकी चीज़ें टाइमली कम्युनिकेट हो जाएं। और इस कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। शॉर्टेज रिपोर्टिंग ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रैप ने, मैं बता रहा था कि कुछ जो तब्दीली आई, तो वी हैव अ सेंट्रल एंड एनए मॉनिटरिंग पॉलिसी बोर्ड ओवर देयर जो कि इसको मेंटेन कर रहा है, और इसके हवाले से उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, एंड दे डू कलेक्ट सम डेटा ऑन द लाइफ सेविंग मेडिकेशंस। इम्प्रूव क्वालिटी सिस्टम्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी सिस्टम फार्मेसी के अंदर भी, क्वालिटी सिस्टम इन द मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग। एंड मल्टीपल सप्लायर, जब आपके पास है ही एक ऑप्शन तो आप नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सप्लोर। एंड चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसा सर ने कहा कि चेंजेस टू मीट नीड्स, सो होपफुली डॉक्टर उबैद इज सेइंग दैट दे आर वर्किंग ऑन सम पॉलिसीज। सो सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि ड्रग शॉर्टेजेस के हवाले से भी कोई रोबस्ट सिस्टम जैसे स्ट्रैटेजिक प्लान है, ये एक्सपीडाइट हो जाए। वी ऑल नो कि अगर 50+ अगर जेनेरिक्स हैं, तो इनकी अनइंटरप्टेड अगर हमारी पॉलिसीज के तहत ये चीज़ें बन जाएं कि कौन बनाएगा और कौन कौन से ऑल्टरनेट्स हैं, उनकी एक्सपेक्शंस, तो जिस तरह की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है,
इस तरह कीमोथेरेपी और कैंसर ड्रग्स को भी अगर प्रायोरिटाइज करा दिया जाएगा तो गवर्नमेंट लेवल पे, तो मे बी द थिंग विल बी इम्प्रूव्ड। एडवांस नोटिफिकेशन सिस्टम्स, इसकी एक अर्ज है, देयर इज नीड टू हैव दिस सिस्टम इन पाकिस्तान। यूरोपियन कंट्री, स्पेन, बेल्जियम, कनाडा, हर जगह एडवांस नोटिफिकेशन सिस्टम्स आ गए। इस सिस्टम की वजह से उनको, हमारी जो अर्ली डिटेक्शन की बात है, उनको पहले से पता चल जाता है क्या आ रहा है, तो वो टाइमली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइसिंग एंड एक्सपीडाइटेड ड्रग रिव्यूज, आप एक्सपीडाइट कराएं तो बेहतरी आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सप्लाई चेन स्टाफ। सप्लाई चेन की मिस हैंडलिंग की वजह से भी शॉर्टेजेस हैं। अगर आपने प्रॉपर दवाई रिसीव स्टोर नहीं की, आपकी ड्रग वेस्ट हो गई और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट केयर नहीं होगी दवा के होने के बावजूद। सो ये मेरा स्ट्राइक है कि स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम फ्यू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, और हम शिफा में ये चीज़ प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। वर्कआउट योर इन्वेंट्री लेवल्स, ये ऑलवेज, इन्वेंट्री कैन नॉट बी स्टैटिक, इट मस्ट बी डायनामिक। जो चीज़ें चल रही हैं उनके लेवल्स बेहतर हों, जो चीज़ें डेड और उनकी तरफ जा रही हैं यू हैव टू रिमूव दैट। और कीमो साइकिल्स के हवाले से आपको खुद पता हो कि आपकी कितनी कंजप्शन चल रही है, और एनुअल कंजप्शन का डेटा भी शेयर अगर कर दें तो कंपनी कैन मैन्युफैक्चर एंड रिजर्व फॉर यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूज लोकल मैन्युफैक्चरर्स, सो वी नो couple of manufacturers are making purely chemo medications। तो लोकल मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो आपकी विद इन पाकिस्तान वो जो इंपोर्ट और बाहर के आने वाली दवाइयों के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, एंड यू कैन प्रमोट दिस लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रोड्यूसिंग गुड प्रोडक्ट्स। डिवेलप अ मास्टर लिस्ट, अभी बात हो रही थी कि हमें जब पता चलता है हम उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं। हम अगर अपनी कमेटी से एक मास्टर लिस्ट अप्रूव करवा के एज अ बैकअप रख लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रोडक्ट्स, तो दैट विल हेल्प एंड सेव आवर टाइम, कि हम इन चीज़ों के बेस पे आपको टाइमली ड्रग अवेलेबल भी करवा दें और पीएनटीसी के अप्रूवल, बिकॉज वी ऑल नो कि एक ड्रग की सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट में काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टाइम सेव हो जाएगा थ्रू दिस मास्टर लिस्ट। Explore Me Too to get approved as backup approval. पार लेवल ऑप्टिमाइजेशन, रेड फ्लैग्स, ये रेड फ्लैग हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। रेड फ्लैग मींस कि आप उसको डेली सिर्फ सप्लाई चेन नहीं देख रहा होता, हमारी मैनेजमेंट तक रेड फ्लैग टीम को, इवन हु और सीईओ तक रिपोर्ट जाती है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, नॉट ओनली इन ड्रग्स, इन ऑल सप्लाईज। रेड फ्लैग्स की मेंटेनेंस को बेहतर करने के लिए हमें ये नया अमल इख्तियार किया। टाइमली इंस्पेक्शन बाय द रेगुलेटर्स कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स। आप उनसे बात करें, आपको कोई भी एंटिसिपेशन है, यू हैव टू कम अप विद देम। और जब आप बात करते हो तो आप उनकी मेन रीजन को, इफ यू कैन हेल्प आउट, अदरवाइज दे कैन सपोर्ट यू। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, अमूमन होता है, आपको पता है पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हो जाती है और ड्रग शॉर्ट इंटेंशनली भी अनफॉर्चुनेटली किसी फोरम पे हो सकती हैं, तो वी हैव टू फिगर आउट। एंड पूलिंग सम पेशेंट्स, अगर आप किसी एक मेडिकेशन के प्रोटोकॉल पे मैक्सिमम पेशेंट्स हैं, आप उनको पूल इन कर लें तो दैट मे हेल्प यू। कीमोसाइकिल्स में आपके पास पेशेंट नीड बेस्ड इंपोर्ट का भी ऑप्शन है, आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एज अ फार्मासिस्ट आप ऑफर भी कर सकते हो कि विच इज द बेटर ऑल्टरनेट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ड्रग, एंड स्विच टू दैट वन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ शिफा। हमारे पास फ्लोडाराबीन, साटाराबीन की 3 years बैक बहुत पूरे पाकिस्तान में थी, तो बहुत प्रॉब्लम रही है, एंड वी नो कि इसकी ग्रामेज में डोज जाती है तो ये 20-20, 30-30 टीके एक एक उसमें साइकिल में। तो दोनों ड्रग्स में वी वर्कड आउट, डेवलप द मास्टर लिस्ट, वी हैव 2 to 3 अप्रूव प्रोडक्ट्स इन बैक एंड, और उन सप्लायर से भी बात करके रखी और उनका थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी रख लिया। तो ये दोनों पर्टिकुलर पाकिस्तानी सिनेरियोज वी हैव कवर्ड विद लोकल मैन्युफैक्चरर्स, और इनकी जहाँ तक इंपोर्ट और उन चीज़ों में ताल्लुक था, कंपनी ने भी हमें सपोर्ट किया और उन्होंने टाइमली हमें चीज़ दी। और ड्रग इंपोर्ट का एक ऑप्शन तो है ही है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इंक्रीज द पेशेंट कॉस्ट। तो मोस्टली ड्रग्स अगर रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगी ये लाइफ सेविंग, तो मे भी हमारा ये मसला भी हल हो। समरी, इट इज़ अ कंसर्न वी ऑल नो, बट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ आखिरी स्लाइड्स पे 8 to 10 बताई, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी अगर आप यूज़ करें और वो नहीं हो रहा, आप सेकंड थर्ड, एक ऑप्शन के अलावा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, यू कैन प्रैक्टिस एंड गेट द ड्रग्स अवेलेबल। जिस तरह रॉबर्ट कूलियर ने कहा कि सक्सेस इज़ अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स बीइंग डन डे इन डे आउट। आप छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई और आपको आपके बताएगा, यू हैव टू डू इट योर ओन। तो अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके अकॉर्डिंगली आप हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर माय रेफरेंसेस। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
Thank you. Thank you, Mr. Facilities, for such an interactive monologue. Finally, we will welcome Mr. Shakilur Rahman, Assistant Manager, Pharmacy at Shaukat Khanum Memorial Hospital, Peshawar. He holds an MPhil in Pharmacy from Abdul Wali Khan University, Mardan, and brings a wealth of knowledge and expertise to our discussion today. Mr. Shakir will address the challenges and regional impact of oncology drug supply in Pakistan. His extensive experience in pharmacy management and his keen insights into supply chain dynamics will shed light on the broader view of our conversation. Mr. Shakir Rahman, please, stage is yours. For giving me this opportunity. So today we are discussing a very critical aspect of the healthcare system that affects millions of lives globally, the supply chain of oncology drugs. The journey of these life-saving drugs in Pakistan is facing numerous challenges that's affecting the treatment outcomes significantly. So I have no relevant financial relationships to disclose. In the content of my presentations will be cancer prevalence, challenges in oncology drug supply, the impact of oncology drug supply and mitigation strategy, what we adopt at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital. So cancer is among the most expensive and lethal number of communicable disease. And its treatment mainly depends upon two things, the availability and affordability of anti-cancer drugs. As you all know that cancer demands a substantial cost, posing a huge burden on patients and families. In Pakistan, we don't have national health insurance. This further worsens the situation. So globally, according to Globacon, every year 186,000 new cases have been discovered, and among which lips, oral cavity, lungs, and colorectal cancer are more prevalent among males, while among females, breast, lips, oral cavity, uterine, and ovarian cancers are more prevalent. The actual number might be greater than this because due to lack of pure availability of the proper registry system in Pakistan. According to PMA, the health budget of Pakistan, as per the recommendation of WHO, should be 6% of our GDP, while currently we are spending 2.9%, which is almost half of that. So the failure of government to invest in healthcare activities further pressurize the already underperforming healthcare sector. So as I already discussed, that mainly the management of cancer depends upon two things, availability and affordability. And in Pakistan, there is almost negligible health coverage. So these are few publications that mainly focus on the barrier in access to oncology drugs. Some of them are from our department as well. So when we look into all these publications in detail, all of them highlight few common issues that include regulatory issues, supply chain disruptions due to various reasons, high cost of the drugs, limited local manufacturing, and lack of awareness and education. So regulatory issues. Regulatory issues in oncology drug supply in Pakistan are the key barriers. They basically include inconsistent drug approvals, quality control issues, limited post-marketing surveillance due to and low regulatory burden on local manufacturers. Inconsistent drug supply. In Pakistan, almost the approval timeline is very lengthy and sometimes it's unpredictable for newer therapies, which leads the approval timeline for new oncology drugs can be lengthy and unpredictable. The delay can result in patients not having access to newer therapies. Drugs like nivolumab, which is approved in other countries, in our neighbor countries like India, took several years to get approved in Pakistan.
So what is the net result? The patients are missing out timely treatment. The quality assurance mechanism in Pakistan is also not robust. Easily counterfeit drugs can enter into the market, thus affecting patient outcomes. There is often inadequate post-marketing surveillance of oncology drugs. So basically, due to the lack of systemic monitoring, which can result in adverse drug reaction and drug interaction going unreportedly. Local pharmaceutical companies, they basically don't manufacture oncology drugs because of complex regulatory requirements. So another important aspect is limited incentive for research and development. The government is unable to spend in oncology drug research within Pakistan, resulting in fewer innovative treatments, and our market mainly depends upon imported drugs. While global pharmaceuticals companies may invest in research of new cancers. Delay in approval processes, as I have already discussed, because of work burden on RAB, there is a delay in approval process of oncology drugs. Supply chain disruptions include logistical challenges, inadequate infrastructure in Pakistan, poor transportation, especially to the rural and faraway areas of temperature-sensitive items, can lead to deterioration of the drugs and or frequent stockouts. Temperature control is another issue. For example, drugs like trastuzumab and rituximab, if are not transported in a controlled manner and the temperature of the drugs become out, so this can lead to treatment inefficacy and disease progression. Demand forecasting, unfortunately, there is no accurately demand forecasting for oncology drugs that leads to either overstocking or understocking of the oncology drugs. For example, a sudden rise in oncology in breast cancer have resulted in shortage of tamoxifen and anastrozole in different countries. Another important aspect are supply reliability. As I have already discussed, that we mainly depends on imported medicines mostly. So basically due to international trade issues, because of as COVID pandemic or because of change in customs, delays in shipment from abroad has happened that results in disruptions of oncology treatment and hence poor patient outcomes. Financial constraints. Limited financial constraint with the government hospitals causes them to stock inadequate levels. Public hospital may struggle to secure funding. Government-funded facilities may face budget constraints that limit their ability to stock high-cost drugs, leading to treatment delays. A lack of coordination among our stakeholders like distributors, suppliers, and healthcare professionals can result in inefficiencies and frequent stockouts. So high cost of the drugs, high prices make oncology drugs unaffordable for a significant portion of population. Patient may forego treatment or delay starting therapies due to financial constraints. Hence, drugs like imatinib can be prohibitively expensive, leading to lower treatment adherence and potentially worse health outcomes. Public hospital may face budget constraints, as I have already discussed, and limitation due to which their ability to procure high-cost drugs leads to shortages. High-cost drugs can also compel distributor to stock only those drugs that are in high demand, exacerbating shortages of those drugs that are essential but low profitable. Limited local manufacturing. High cost, low profit margin can discourage our local manufacturer to manufacture oncology drugs. A local manufacturer may not opt to produce drugs like paclitaxel if it's low profitable, resulting in shortage of the essential chemotherapy drug.
Importing drugs typically incurs a high cost due to tariff, shipping fees, and currency fluctuation. This translates in increase in prices of the oncology drugs, and poor patients can't afford these drugs, hence they may forego treatment, which can affect their treatment outcomes. For example, drug like trastuzumab may be significantly expensive if imported than the one locally available. A lack of local manufacturing means fewer generic options. Limiting options for a lack of local manufacturing means fewer generic alternatives are available, limiting options for the affordable treatment. For example, bevacizumab 400 milligram, the one which is originator brand, is cost almost 1,35,000 or so, while the one which is available manufactured locally cost around less than 80,000. Inconsistent supplies. The reliance on import, as I have already discussed, leads to inconsistent supply with frequent stockouts of essential medicines. This can disrupts patient regimes, affecting patient outcomes. Now coming to impact of oncology drugs on patients, these are again few publications that highlights the outcomes of the patient when the drugs are short. So due to existing shortages of different oncology drugs in Pakistan, numerous patients are finding themselves in desperate state. As you all know, the treatment of almost all chemotherapy, almost all cancer depends upon the combination of drugs in their chemotherapy cycle. If even a single agent is missing, this will affect patient survival and treatment outcomes. So the paucity of oncology drug is clearly indicating the risk of on-treatment uncertainty. And if these agents are not managed on urgent basis, then the chances of putting treatment on hold, leading to poor outcome, will be obvious. On the other hand, for new diagnosed patients, limited options are left, which includes substitution of the short agent with other suitable one, or switching them to alternative therapy. However, in the latter cases, the guarantee of excellent treatment response with no added risk of adverse drug reactions may be compromised as compared with the preferred treatment plan. So let's take this case. A 45-year-old mother is diagnosed with breast cancer, and she has been prescribed a specific chemotherapy protocol that has shown promising result for her cancer type. The drug is currently unavailable. The delay in receiving her medication causes the patient an immense state of anxiety and fear about the disease progression. Her family also feel helpless and frustrated because of her deteriorating condition due to lack of availability. This is another pediatric patient who is diagnosed with leukemia, experienced a delay in receiving vincristine, a critical drug in his treatment. The delay caused emotional distress for the patient and his family, who are already struggling with emotional and financial burden for their child illness. The situation becomes more painful when we are unable to provide optimal pain relief or palliative therapy because of disease progression. So, as we already know that narcotics are not available in Pakistan, all these factors can cast a long shadow over the lives of cancer patients. The cancer journey of these patients is not just a battle of disease, but a powerful illustration of love in the depth of hopelessness. So what are the mitigation strategies that we use in Shaukat Khanum to avoid drug shortages? So basically, we import drugs. We regularly generate drug shortages email to our consultants mentioning their alternatives and the available drugs. And another strategy is stock forecasting. For drug imports, when the medication is not registered, it's not available or out of stock, or it's a newly approved medicines, or it's an investigation drug which cannot be obtained from Pakistan, the drug may be procured from outside the country, from the regular supplier or from the manufacturer directly. Pharmacy will raise the request. MMD department in liaison with MMD department will collect the information like the availability and cost of the drug. Medicine will be procured as per the procedure. So basically, it's not visible, but this is our drug import form. The drug import form, along with the patient identity document,
is sent to Drug Regulatory Authority of Pakistan. The Drug Regulatory Authority of Pakistan then issue us an NOC. The NOC is forwarded to MMD department, and the MMD department, based on this NOC, procure drug for the patients. This is basically the Excel sheet that shows us drugs, that how much drug is left with us in pharmacy. By updating all the columns on the extreme right side, if you can see, it clearly shows us that how much stock is left with us. Apart from this, our HIS is smart enough that it generates emails of when the drug is going to the dead level. It generates a regular emails to specified personas, by which we only detect drug shortages and manage them from different suppliers. Some potential recommendations that are already discussed include strengthening local manufacturing capabilities, enhancing regulatory framework, improving supply chain logistics, implementing technology solutions, establishing price regulatory mechanism, and improving data collection and research. So collaborative efforts, as already discussed, between government and healthcare providers and the industry will be crucial in making these sustainable, if these decision-making crucial in making these solutions effective and sustainable. To make them effective, the supply chain and production of oncology drugs. So let's unite our effort to ensure that no patient is left without the treatment they need. Let's help the patient in their fight against cancer. If we at Shaukat Khanum can manage drug shortages, then we also can make efforts to make drug shortages to cope with drug shortages on national level as well, so that the patient get their treatment timely to avoid drug progression, disease progression. Thank you very much. Yes. Thank you all. Thank you, Shakil. Thank you. Can you hear me? Thank you, Shakil, for excellent talk. To be honest, I came here to support Shakil, but one question raised in my mind. So, around 2 to 3 weeks ago, two of my patients came to me in the clinic and they were not having any financial constraints, and they asked me to give me the standard treatment. And the standard treatment, both of them had a renal cell carcinoma. So I recommended them to have nivolumab along with cabozantinib. And they asked me to arrange it as soon as possible. And I contacted my pharmacy. I know it might not be the appropriate forum to discuss this issue, but what I can feel that this is not the only Shaukat Khanum's issue. This is the country-based issue. So I'm discussing it here. So what should we do for those patients who can afford the medicine, but it takes long time, although Shakil very excellently discussed the strategies to curtail this issue. But what practical things which we can do for these patients so that they can get their medication who don't have any financial issues? So what we can do in our country, especially in Shaukat Khanum? Can you please elaborate on this? Thank you. Thank you very much for the excellent question, and I can understand the pain that you have feel while the drugs are not available with the specific field. Being in a physician, you would like to prescribe, and a timely utilization of that drugs will definitely help to get a better outcome. While talking about the nivolumab, we have in a certain challenges because the drug is coming through some certain programs, which is offered by a third party or international programs. That is the key. You are very much familiar with that. The recently challenges are that the suppliers are not dealing priorly to the Pakistan to certain scenarios of their internal problems. The only way forward at the moment we have is to import the drug on a patient name basis. And that's certainly requires a certain timeline, although the regulatory framework is very robust in that time because they do provide the NOC within the timeline. But the problem is that to import that drug and the logistics and all the scenarios which needs a certain time, which usually we face in 6 to 8 weeks like timeline.
But apart from this, these are the individual cases where the drug or patient can afford the treatment, and you have a mechanism of having a drug after 8 weeks timeline. But in general, those people who cannot afford, that will be something, a challenging thing that needs to be understand. And we don't have any proactive system where we can identify it. Even the DRAP do have the data that how many numbers of a different patient name basis drugs are imported on a certain scenarios. So they can pick those information, and then they can proactively think about that. Okay, there's a number of XY cases. They are continuously coming with a request from the physician. We should proactively early register those drugs and make sure that drugs should be available within the country. So this can be a better way of dealing if we have a high number of volume of patient with a certain scenarios. So this I any way in which we can in which we can coordinate with the rest of the GCA approved centers as Shifa and Aga Khan, and if they have these medicine, we can bring from them and we can buy from them and then we can return. Is it possible in Shaukat Khanum? That needs some limitations, because if the drug is imported on a patient name basis, this has become challenging to liquidate to some another patient. What I feel is the one important challenging part is that we put the responsibility on the patient. Actually, we say that if this is a prescription, go and get an approval from a DRAP and do import on yourself. So how a single layman person who have the money, who can afford, but he doesn't have any experience of importing that drug. So then the organization like Shaukat Khanum, Shifa, Agahan, who are they are proactive, they are facilitating the patient for on their behalf to import those drugs. But interchangeable scenarios is something where the regulatory limitations are problem. Thank you. Give me a mic, please. Yes, thank you very much. Dr. Saab, we do have a collaboration with Shaukat Khanum in Karachi, Aga Khan, major institutions, and in Rawalpindi, Islamabad. So, import की medications तो हम एक दूसरे को exchange नहीं कर सकते, जो कि अगर किसी patient name base पे आएंगी. लेकिन अगर वो institutional base है, तो we can formally get approval from DRAP that we have got this inventory and the drug is needed in some other institute. So they can allow us to borrow or sell to you, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम ऐसे पोटेंशियल जो सप्लायर्स हैं उस सिलसिले में भी हम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं. जो पेशेंट खुद नहीं ला सकता तो उनको हम सेफ ड्रग के हवाले से गाइड ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जब एक दवा नहीं मिलती तो वो मारा मारा फिर रहा होता है. तो वी एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन हेल्प हिम कि ये 1 2 3 जगह हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं जहाँ के वो हेल्प ले सकता है. जी, थैंक यू. Any other question? For that, I have a question in my hand. So, any other question? So, please come close to the mic and ask. I would like to ask you a question. Fortunately, we have Rasa here from that. So, I have some couple of questions. I think some of the issues have already. I have problems. From Ubaid Saab. So why not? That we must have is some local manufacturing facilities available within the Pakistan. That's a good strategy to overcome the shortages. And I have a experience that one time I faced a drug short in the market, and then I contacted with one of the regulator and said that we have a local manufacturing is available. I'm not going to be giving the detail of the name of the drug and the supplier. But once we start the drug, we identify some problem. The major problem are the pharmacokinetic problem. The drugs never achieve the plasma level. When we get into depth, then we realize that the drug liberation and the distribution and the metabolism and excretion, you can say the kinetic fate of that drug is not similar to the reference listed drug.
So drug failed to achieve the level. So my question is that if we go to develop the local manufacturing, the first thing I believe is to develop the quality drugs. This is the most challenging problem we are facing in Pakistan. Right now, we have so many drugs available, locally available, but our trust and faith is not good. And we've always dependent on the import or USFD or EMA or like TG Australia approved drug. So this is the second question from Ubaid Saab. And third, obviously, again, the problem of the APIs. So many speakers said that we don't have active pharmaceutical ingredient available in Pakistan. So what strategies the DRAP is going to adopt to make available all APIs and work on the basic manufacturing of the API within the Pakistan? हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। सारी क्वेश्चन जो है वो एक हॉट सीट पे बैठने वाले के लिए हैं। पहला जो सवाल था कि डेटा आपने यूएस का क्यों प्रेजेंट किया। देखिए, डेटा बुनियादी मामला है मालूमात के जमा करने का। अगर डेटा आपका ओरिजिनल नहीं होगा, एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा, लीजेबल नहीं होगा और इंट्रिकिटी वाला नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर बनाई गई सारी मालूमात जो है ख़राब हो जाएगी। तो मैं बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जामियात का जो डेटा है, पाकिस्तान की अपनी सनतों का जो डेटा है, वो आलूदा है, कंटेमिनेटेड है, इंटीग्रिटी का नहीं है। दैट्स व्हाई आई यूज द डेटा ऑफ द यूएस एफडीए, कि वहाँ 38 करोड़ अवाम है, हमारे 25 करोड़ अवाम है, तो मैं आसानी से कोरिलेट कर सकूँ और साइंस की जो फ्रेम्स हैं उसको बताएं। सेकंड जो सवाल है वो बहुत ही खतरनाक सवाल है कि पाकिस्तान में दवा जो है वो इफेक्टिव नहीं है। आइए ज़रा सा इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बात 100% सही नहीं है, मोर देन 100% सही है ये बात। सारी दवा की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर हर स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी डिले करती है अप्रूवल में। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि हम कितना इंडस्ट्री के अंडर में काम करते हैं या इंडस्ट्री के जेर तसल्लुत काम करते हैं, उसको लिख लीजिएगा। यूएस एफडीए ने 2023 में 2023 में टोटल ड्रग जो अप्रूव की है वो 800 है। कितनी है? 800। कितनी आबादी वहां पे यूएस एफडीए में जो सेंटर फॉर डिजीज एवेल्यूशन, सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूशन एंड रिसर्च, सीडर के पास जो एम्प्लॉय हैं वो नॉट लेस देन 5000। टोटल एफडीए 17,000 एम्प्लॉय। इन पाकिस्तान ड्रैप ने जो ड्रग अप्रूव की है 2023 के अंदर, इट्स मोर देन 10,000। 800 और इधर 10,000। आज भी हम पे गिला ये है कि आप दवाएं को डिले करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं। आपने कहा मोनल क्लोनल एंटीबॉडी पाकिस्तान में नहीं बनती है। जनाब, बत्तख हम नहीं बना सकते, बत्तख को मुर्गी नहीं बना सकते, हमें अपनी लिमिटेशन का अंदाजा होना चाहिए। केमिकल और बायोलॉजिकल बहुत अलहदा मामला है। मैं और ये मेरी मिसेस यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यूएस एफडीए में जब सेंटर फॉर ड्रग एवेल्यूशन में जाते थे फॉर रिव्यूज के लिए, तो हमने देखा कि जो जो लोग रिव्यू में अप्रूवल दे रहे होते हैं उनको टैकीकार्डिया ज्यादा होता है इंतकाल के वक्त। वहाँ हर इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस है। इतना आसान नहीं जिस वक्त हम ड्रग अप्रूवल दे रहे होते हैं। यहाँ पे तो खैर मैं ड्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ कि इम्यूनिसिटी का क्या प्रॉब्लम आएगा। आप पानी का खतरा समुद्र में छोड़ लें, उसके बाद आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। देयर इज नो विजिलेंस गन मैंने ऑन कर दी है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो लिस्ट ऑफ कंसर्न है, जरा कभी वो मुझे मौका दीजिएगा, आपसे शेयर करेंगे। इनकंसिस्टेंसी इन दी बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, ये अमेरिका की मैं आपको पहले मिसाल दे दूं ताकि आप हम यहाँ समझ सकें। अमेरिका के अंदर जब पहली बार ये जो ड्रग आई, इमल्शन बनाकर लेकर आए सेंटिम्यून न्यूरायल साइक्लोस्पोरिन, तो उसकी रिलीज को उन्होंने प्रूव किया कि भाई आप ऐसा कीजिएगा, जूस पी लीजिएगा। ये इनोवेटर कह रहा है। कौन सा जूस पीजिएगा? ऑरेंज जूस। जो जेनेरिक वाले थे उसने क्या किया, दूध में वो मिल्क चॉकलेट मिल्क के साथ उसको इस्तेमाल किया। अब चॉकलेट मिल्क में फैट था, फैट कैसे एब्जॉर्ब हो गया, ड्रग अप्रूव्ड हो गई। अप्रूव होने के बाद पता लगा जब बच्चों को दी गई, एक बच्चे की उम्र 4 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल थी। जरा सा इमेजिन कीजिएगा, बच्चों को फिट्स पड़ना शुरू हो गए। ड्रग वॉज गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट आफ्टर द ट्रांसप्लांट और पेशेंट ने फिट्स पड़ना शुरू कर दिया। वी हैव ए हार्ट, वी हैव ए लेफ्ट ब्रेन, वी हैव ए राइट ब्रेन। हम डिटेल के अंदर जब घुसी है एफडीए मालूमात की, ये वो वक्त है जब हमने भी फार्मेसी के बाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे। इट वॉज 1995 एंड 1996। तो पता लगा जी इन एफिशिएंसी है इन बायोइक्विवेलेंस नापने में। रिसेंटली जस्ट अ डे बिफोर, अभी 24 घंटे नहीं हुए, एफडीए ने एक रिपोर्ट जारी की है
कि हमने कुछ आई प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक नए स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई किए। जेनेरिक बनाना इतना आसान नहीं है। अब अगर पैरास्टामोल की जेनेरिक है तब तो कोई मसला नहीं है। अब अगर यही जेनेरिक आप कहने जा रहे हैं इंसुलिन की, या अगर आप कहने जा रहे हैं आयरन कंपोनेंट प्रोडक्ट की, या आप कहने जा रहे हैं सस्टेनिटीज की, तो हमें लॉट ऑफ डेटा चाहिए, सच्चा डेटा, सच्चा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये बात को रोकता हूँ ताकि ये बात मुकम्मल हो सके। एक और बात थी कि पाकिस्तान में एपीआई नहीं बन रहा। हम सब साइंस के लोग हैं और दिल से बैठे हुए हैं। जो हमारा माशरा है ना, वैसे ही हमारा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। 1947 में हम दोनों आज़ाद हुए थे, हम भी और पड़ोस भी। आज दुनिया उस पर डिपेंडेंट है। मैंने आपको दिखा दिया 84% ऑफ द एपीआई वहाँ से और चाइना से जा रहा है। अमेरिका के अंदर जो दुनिया का सुप्रीम मुल्क है, अगर इंडिया और चाइना झगड़ा कर लें तो सबसे पहले जो जो नुकसान में पहुंचेगा वो अमेरिका पहुंचेगा। दवाई नहीं मिलेगी वहाँ पे लोगों को। हमारे पाकिस्तान में एपीआई बनाने की खुल्लम खुल्ला जो है प्रमोशन अवेलेबल है, कंपनियां बना रही हैं। आज 70 साल गुजरने के बाद भी उनको टैरिफ प्रोटेक्शन देते हैं। आप लोगों को बताने के लिए, मुझे यकीन है आपको पता होगा, टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो लोग एपीआई बनाएंगे वो एपीआई को अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वो एपीआई यहीं बनेगा। 70 साल के बाद भी आज हम अपना एपीआई दुनिया में कहीं बेच नहीं पाते। आज भी हमें एपीआई, हमें यहाँ बनाने के बाद भी हमें 70% का और 35% का टैरिफ प्रोटेक्शन देना पड़ता है। हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों, कहीं एपीआई के नाम पर हम कोई तमाशा तो नहीं कर रहे। एपीआई नहीं बना पा रहे। जब हम एपीआई नहीं बना पा रहे तो हमें बहुत तरीके से और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये हमारी पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती भी है और बड़ी बदकिस्मती भी है कि हमारे पास इतना बड़ा बड़ा वो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप जरा खुद सोचिए, प्रोथायडीन एंटी डिप्रेशन की ड्रग है, कितनी बनती है पूरे साल में? कितनी चाहिए आपको? पूरे साल में मैक्सिमम चाहिए होगी आपको, मुझे तो नहीं अंदाजा, 1 किलो चाहिए होगी। तो भाई किधर गया आपका ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी का, कराची यूनिवर्सिटी का? किसके पास प्रोटेक्शन नहीं है? यू कैन नॉट प्योर इट। हमने बहुत सारे पीएचडी प्रोड्यूस कर दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दी, हम सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे प्रोथायडीन। ये रियलिटी है। गो एंड सिंथेसाइज इट, आपके लोगों को डिप्रेशन का मसला हल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं, तो हमें अपनी लिमिटेशंस को समझने के लिए दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और भी बात इस मौके पे अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, कि वो एक बच्ची ने भी बहुत अच्छा बताया कि हम प्रोडक्ट का ओरल डोजेज फॉर्म बना लेते हैं। इट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्लीज अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। मैं कहूँगा ज़रूर बनाइए, लेकिन उसका सीएमसी पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, कुछ दस्तरस हासिल कर लीजिए। व्हाट यू नो एंड हाउ डू यू नो, ये जो हाउ यू नो, उसके लिए जो गैप्स हैं वो कर लीजिए। कैनेटिस की अगर कोई रिपोर्ट डॉक्टर साहब मिले, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हमारे जो सीईओ हैं डॉक्टर आसिम राव साहब, और जो कलीग्स हैं, ये सब फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं और फार्मेसी के साथ अटैच भी हैं। आपकी बात बहुत इज्जत से सुनते भी हैं, तो ज़रूर बताइए ताकि कुछ ऐसे पर एक्शन किया जा सके। अगर ड्रग इफेक्ट नहीं कर रही है और हम प्लेसिबो में खिलाए चले जा रहे हैं। मैं तो बाज़ दफ़ा अजीब सा बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि बाज़ दफ़ा हम ड्रग रिसर्च नहीं करके बेहतर कर रहे हैं। आपकी ड्रग हम समझ रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे साथ है। हम प्लेसिबो इफेक्ट में और एक्चुअल इफेक्ट के दरमियान तरतीब बिल्डअप नहीं कर पा रहे। वो ड्रग हमारी बॉडी से बाय ट्रांसफॉर्म हो रही है, और बाय ट्रांसफॉर्म होने के जो इंडिकेटर्स हैं, अब एआई का दौर है, हम बूढ़े से ही सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है सिग्नल्स के अंदर कि जी प्लेसिबो इफेक्ट और नोसेबो इफेक्ट। नोसेबो इफेक्ट एक और हमें नजर आ रहा है कि आपको प्लेसिबो तो आया नहीं, एडवर्स इफेक्ट उसका आ गया, जो आपने दवा नहीं खाई थी या खाई थी जो ओमिप्राजोल होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, या किसी और कॉम्बिनेशन से एब्जॉर्ब नहीं हुई थी। तो प्लीज क्लासीफाई ड्रग इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। शीशे को लकड़ी की तरह डील ना करें, लकड़ी को शीशे की तरह डील ना करें। एवरी ड्रग इज ए डिफरेंट ड्रग। तो आप क्लासीफाई कीजिए कि कौन सी ड्रग जो है वो फ्रेंडली है, कौन सी डिफिकल्ट है, कौन सी इजी टू मैन्युफैक्चर है, कौन सी कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर है, ताकि हम उस लिहाज से उसके फैसले करने में आसानी हो सके। सॉरी मैंने लंबी बात कर दी, बहुत शुक्रिया। Dr. Bath shared with us. And I agree, yes, there are certain constraints and then some challenges we are facing, but we always look at the DRAP. Obviously, DRAP is a regulatory body, and we always rely and requesting always to the Drug Regulatory Authority of Pakistan. One more thing I would like to discuss because we have some time. So can we expedite the process of the approval? Because some of the participants and the speaker said that we are facing very delay whenever we are put request to the DRAP.
So can we do something to improve the process of approval of the non-available or unregistered drug in Pakistan? Because you can understand the impact of the non-availability of drug, how it's impacting the life of the patient. So can you say something on this? जी, ये बहुत शुक्रिया। ये एक पेन की बात है कि हम दवा आपको टाइम पे अप्रूव नहीं कर पाते या टाइम तक पहुंच नहीं पाती। अच्छा, जो ड्रग न्यू ड्रग की अप्रूवल का मसला है, अगर मुझे नहीं मालूम कि इसको सोसाइटी कैसे लेती है, क्योंकि हम जो जो हमारी कांग्रेस है जो हमें कहेगी, पार्लियामेंट, हम उसके अंडर में काम कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, जो जो न्यू ड्रग है हमारी, अगर वो दुनिया में अप्रूव्ड है, टू मी एज ए स्टूडेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, समरी ऑफ अप्रूवल मंगवानी चाहिए और बाय डिफॉल्ट उसको अप्रूवल दे देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यूड हो चुकी है। इक्का दुक्का जो बातें हैं वो चंद मिनटों में हल हो जाएंगी। आजकल के दौर में तो कंप्यूटर पे तो 0.5 सेकंड में वो हल हो जाएंगे। सेकंड जो बात ये कि जो आपको चाहिए पेशेंट के लिए दवा, अब आइए हमारे मसाइल भी सुनिए। हमारे पास एक तरफ एफआईए बैठी हुई है, एक तरफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बैठा हुआ है, एक तरफ अंडरलाइन जो लोग काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो ये समझते हैं कि कंपनी वाले जो लोग हैं वो तो निचोड़ रहे हैं खून अवाम का, गवर्नमेंट वाले जो हैं वो उनका निचोड़ रहे हैं। एक परसेप्शन के साथ हम चल रहे हैं। इस परसेप्शन में कोई भी ऑफिसर जिसकी तनख्वाह 1.25 लाख 1.5 लाख है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है भाई मैं क्यों रिस्क लूँ, कल मुझे सवाल जवाब करना पड़ेगा। सोसाइटी को आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान एक अजीब क्राइसिस से गुजर रहा है। ड्रग अवेलेबल है, मरीज को लग नहीं पा रही। जिसके मरीज को नहीं लग पा रही उससे दर्द पूछिए, दर्द हो रहा है, दवा नहीं पहुंच पा रही। दूसरा जो एंड है कि भाई उन्होंने कहा कि चूंकि नार्कोटिक मिसयूज बहुत हो रहा है, भाई मिसयूज एब्यूज को रोकना सोसाइटी की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नाकाम हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लेजिटिमेट यूज को हम रोकें। ये माइंडसेट को प्रमोट करना पड़ेगा विद इन ड्रैप। उसमें मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, समझता हूँ ये बात, लेकिन ड्रैप की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो इसको समझने में मुझे लगता है कि आगे फिर कई टाइम लगेगा। अल्लाह Okay, करेगा thank अच्छा हो you. जाए। Thank you, Dr. Ben. Okay, yeah. फैसल अजीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हम थे तो इसलिए कि हमसे शायद सवालात पूछे जाएंगे। मैं सिर्फ उबैद साहब को एक छोटा सा, आपने अभी डेटा शेयर किया कि वेस्ट में 2023 में 800 ड्रग रजिस्टर हुई, पाकिस्तान में 10,000। तो अब ये वो कौन सी 10,000 थी जो रजिस्टर हुई? अनफॉर्चुनेटली मे बी एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, हमें देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स वी आर अप्रूविंग और अपनी एफर्ट्स वहाँ हम डाल रहे हैं, इंस्टेड कि हम कोई और लाइफ सेविंग और क्रिटिकल ड्रग्स, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में रेड फ्लैग किया इसकी बात की। इट मीन्स कि हमें कोई प्रायोरिटाइज करना होगा कि विच ड्रग्स आर टू बी रजिस्टर्ड ऑन प्रायोरिटी ऑन फास्ट पेस। आपने खुद कहा कि बहुत सारी चीज़ें एफडीए अप्रूव्ड हैं, हमें उनमें समरी मंगवानी चाहिए अप्रूवल, बट वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स कि वी आर अनफॉर्चुनेटली बाउंड टू गेट द ड्रग्स इम्पोर्ट, इंस्टेड के वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो जाए। बॉर्टिज्म में अब अवेलेबल हो गई, लेकिन बड़े अरसे के बाद अब चल रहा है, सिलसिला है, लेकिन 10,000 में से इम्पोर्टेंट ड्रग्स को अगर प्रायोरिटी पे कर देंगे तो मेरे ख्याल में हमारी ये पेशेंट, स्पेशली ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स की एगनी दूर हो जाएगी। और बड़े ओपन हार्टली करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने कंज्यूम करना है। क्या ये ड्रग प्रूवन है? क्या यही पाकिस्तान की ड्रग्स जिसकी भी आपने बात की कि बाहर यूएस में, यूरोप में, जापान में कहीं सबमिट भी हो सकता है ये एप्लीकेशंस? आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है ना। कन्वर्ट करें अपने डेटा को और देखें सीएमसी क्या कहता है, इसका समरी क्या कहती है, विल इट बी एप्लीकेबल टू यूएस और यूरोप? ये सब सेफ्टी के लिए है। आइए, जो ड्रग अप्रूव की गई अमेरिका में भी, आउट ऑफ नॉट 800, 700 समथिंग है, इसमें 41 ड्रग्स जो हैं वो न्यू ड्रग्स हैं। हर ड्रग न्यू नहीं है, उसमें मैं जेनेरिक की बात कर रहा हूँ। ये जो 41 ड्रग्स जो न्यू ड्रग्स हैं, अच्छा देखिए, वो जो 5-6 ड्रग्स हैं ना पिछले साल की, और उसको मैं हटा के थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं पकड़िएगा, 41 का इट माइट बी 38 और माइट बी 47। तो ये जो 41 न्यू ड्रग अप्रूव्ड हैं वहाँ पर, वो हैं अक्सर इनमें आप देखिए ऑर्फन क्लास की ड्रग्स हैं वो। और अब अगर आप कहें कि पाकिस्तान में हम इस वक्त फौरी तौर पर कार्टी सेल थेरेपी अप्रूव कर दें, तो कार्टी सेल थेरेपी की जो सबसे महंगी कीमत है $4.5 मिलियन, तो वो यहाँ पे तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा पॉइंट। अच्छा, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दे रहे। जिन लोगों का इंटरेस्ट है उसके कुछ और भी हमारी नज़र में कोई और मामला हैं। पोस्ट मार्केटिंग कमिटमेंट्स एंड पोस्ट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स कंपनीज को इम्पोज की जाती हैं ड्यूरिंग दी अप्रूवल, कि वो न्यू करें। वहाँ पे इतने मरीज अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो आगे बात जाए। और पोस्ट मार्केट मैं देख रहा हूँ बहुत सारा डाटा इसमें इसके जरिए देखने का मौका मिलता है कि जो मुख्तलिफ हमारे वो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं यूएसएफडीए के, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है,
ऑफ लेवल यूज़, खासतौर पर मैं एंटी कैंसर ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो हमें डेटा बता रहा है, वहाँ पे आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ताकि आप पोस्ट मार्केट जो इफेक्ट्स हैं उसको नॉलेज जनरेट कर सकें और नॉलेज को इम्पार्ट कर सकें, जो कि आप वहाँ पर बाहर भेज सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी ड्रग रिसर्च की गई हैं वो सब जेनेरिक ड्रग रिसर्च की गई हैं, और आपके जेनेरिक ड्रग का रिसर्च करने का एक प्रेशर होता है पूरा। बदकिस्मती है, बाहर जेनेरिक ड्रग रिसर्च होना भी इतना आसान नहीं होता। उसका भी जो प्रोसीजर था पहले, मुझे याद है 14 महीने होता था, अब ये 8 महीने। 8 महीने भी उस वक्त आया जब हमारे पास नॉलेज एडेड स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स है, कासा, और उसके बाद हमारे मल्टीपल ग्रुप्स हैं। केमिस्ट्री का ग्रुप अलग है, माइक्रोबायोलॉजी का ग्रुप अलग है, बायोटेक्नोलॉजी का ग्रुप, वो बायोलॉजी का ग्रुप अलग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप अलग है, कंट्रोल्स का ग्रुप अलग है। इन सब के इंडिपेंडेंट ओपिनियंस आते हैं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन को क्रॉस किया जाता है, तो इट टेक्स 8 मंथ। उसके बाद जाके वो अप्रूव करते हैं ड्रग को, क्योंकि दवा, एक एक ड्रग, हर डोज के पीछे एक पेशेंट है, और हर पेशेंट के पीछे एक फैमिली है, चाहे वो डोज कोई सी भी हो। तो ये है मसला। It has been such an amazing session, but we are short on time, so we would like to invite Mr. Tahir Aziz Mughal to conclude this session and share his final thoughts. Okay, thank you. So session conclude, and I think so very simple. I would like to thank you, the most respectful speakers, Mr. Ubaid Saab specifically, and Mariam Fatma, Faisal Aziz Saab, and obviously Shakil Rahman. So today was the day of the drug shortages, dedicated to drug shortage. I hope we will all holistically review and collaborate with each other and try to resolve this shortage. So simple. Thank you all the audience, mashallah, and excellent session of the question answer. Thank you very much. Okay. The participants will be awarded CME credit hours for attending this session, so please fill your credentials very carefully so that to avoid any inconvenience. Thank you all for such an amazing session. And Miss Amna, did you see any waving hand? No, I didn't. So they, so they definitely enjoyed the session. Thank you all. Yeah, I second that. Thanks.